Good morning, everybody. Welcome to the Sunday webinar. This is a kind of a routine webinar we used to do. I was a little surprised that I requested Pawan sir to take it and he refused to do it. So he's busy somewhere else and is another family work. So I decided to take it myself. Don't go by any indicators. These are all testing and trying as I have been doing. Now, before we proceed, anything is, I just want to make few comments. Remember this word. Anybody can tell me what does this word means? Do your own Do research your and own analysis. research and analysis. Yes, perfect. Before you adopt anybody's anything, please do this word. आपको जितने मर्जी YouTube पे इन्फ्लुएंसर मिले, ये मिले, वो मिले, कोई आपको कहे ये करना है, वो करना है, जस्ट उससे लॉजिक समझो and try to do yourself. A thing, if you acquire knowledge, you become lethal. But if you are dependent on others, then you are just like a normal एक war में सिपाही है, and you are just not going to make too much money because you will be looking at that person all the time. So that's why I try to bring the easiest possible things for everybody. Since I'm not SEBI registered analyst and I've been a kind of a free thing for the free kind of an education imparter for last almost 4-5 years now. So I don't come in that ambit of fin influencers. अब वो लोगों ने क्या किया स्टॉक मार्केट से हटके क्रिप्टो मार्केट में घुस गए because that does not come under SEBI's guidelines. The people who were sending you WhatsApp message आओ ज्वाइन करो हमें करो अब वो धीरे धीरे सारे क्रिप्टो पे घुसना शुरू हो गए. So just be very careful when you are following anybody, including me. I don't say that I'm kind of a foolproof kind of a guy. Today, I'm not going to talk anything which is not going to be anything. It's not going to be very difficult. I'm going to try to make it very easy for you. Somebody who has good amount of money wants to invest and wants to make a reasonable profit of 10% on an annual basis and is more than happy with 10%. I think so 10% is reasonably profit. If you achieve it in 3 or 4 months, it's good. If you take 6 months, then also it's good. Even if you take in a year, then also it's good thing for you. So before I start again, I add a line to this word is, I'm not SEBI registered. So anybody who thinks that I'm not good can or doesn't like it can leave it because I'm being open, kind of am giving a disclaimer. Today, we are not going to use anything known as TradingView. We are not going to use TradingView. We are going to use a simple calculator and a charting platform. We'll make a one-line platform and a screener, and we'll take out a stock and we'll see whether it works or not. Now, there are some set rules which I just want to put it for you all is. One is we are going to use only charting platform. We are going to use a calculator. We are not using any price action methods. We will be using only one indicator, that too on a charting, that too only on a charting platform. We are not going to use it on TradingView in any way. Maximum, if we say we have, just for an example, I'm taking. For example, if I take 5 lakhs capital, many of you have more than this, but this is telling you why I'm taking 5 lakhs is you can even decrease it to 50,000. You can decrease it to 1 lakh, but you will divide it into 5 parts. There is going to be a set rule to enter. Entry is when charting gives indication bus. We will divide this capital of 5 lakhs into 5 parts. So whenever it gives an indication, we will enter with one part. One part
entry of same value. Let's say you can't make it 5 lakhs, मैं 2 lakh कर लेता हूं, मैं 50 lakh कर, no. All 5 lakhs means is 1 lakh each. Maximum entry is 5 times. One entry of same amount to a maximum of 5. And exit has only one rule is 10% of entry price. I think so this is clear. Anybody can take a screenshot of it because there's nothing very big thing into it. We will exit on 10%. It may work, it may not work. We will see live. I don't want to show anything which I have calculated in the back and just tell you to go and do your research. I will just show you one. We will usually pick up a stock which has given us an indication 6-7 months back. And from there onwards, we will start checking a few of the stocks. So it's a very simple thing. So we are going to charting. So once we go to charting, click on this button known as create scan. Okay, one more point. It is to be done only in Nifty 100. You can stretch according to your pocket and your risk-taking appetite. I will only say go for Nifty 100 stocks. Because even if you start getting a lot of entries into it, if you start getting too much entry, you cannot take entry in every possible stock. So that will be then breaking of the rules. So if I say 100 stocks gives me an entry, so I will be ending up spending somewhere around about 5 CR. So according to your budget, do it like that, the way you want to tighten it. You can decrease to Nifty 50 also. If you have good amount of capital, you can go to Nifty 200. But before you invest anything, do a lot of paper trades. See 3 or 4 trades which are doing. Go retrospectively check the data. And then if you feel convinced, then only take it. Do consult your financial advisor when you're taking these kind of trades. So coming on the charting platform, our first is, I'm just shifting to Nifty 100. Click on the button plus, type RSI. RSI relative crossed below. See, it is an RSI based swing trade strategy. And press number, sorry, it has press on number. This will come as default 20. Just make it 30. So run scan. So there are 2 stocks which are coming into this criteria. I'm not going to see them because this will be, so we are going to save the scan. So we are going to say RSI 30 swing trade. And I am going to submit it. So once I submit it, there's if you come down, there is a backtest column which comes into play. So you may get stocks like, see, these days the market are in a very good way, giving a lot of opportunities. So everybody is, मैं सर अब खरीद लूं, कैसे खरीदूं, ये खरीदूं. मैं अभी कह रहा हूं कि avoid buying के ऊपर मेरा stance clear है. I just want market to close above 24,800. Then only I will go ahead with my real bigs, मतलब trades, like जो मैं दूसरे वे से लेता हूं, जो breakouts पे लेते हैं. But अगर किसी ने bottom fishing करनी है, this is how I'm going to show how you do little bottom fishing. Trust me, you are trying to catch a falling knife. So अब हम सबसे पहले ये वाला stock देखते हैं. I don't know what stock it is. IT, HCL Tech. 4th of June 2024, it gave us the indication. So I need to switch on the calculator also. So I'm going to only use these 2 products. So I'm going to click on HCL Tech. So it gave me first was on 16th of April. So I'm going to take, क्योंकि इसमें फ्री वर्जन में 9 months का डाटा आता है, तो मैं यहीं से लेना शुरू कर देता हूं जहां पे मुझे नजर आ रहा है. So can anybody
note down, it gave us the first indication on 16th of April. Next day की opening है हमारे price 1476. So we put it 1477. Then plus next indication it gave me on 1388. It opened on 1372. 72 plus third indication it gave me here 1305. It opened on 1321. After that, it has not given me an indication and it started moving upwards. At none of these 3 points, it made a very next day or in the next 4-5 days, 10% increase divided by 3. What is your average price? 1390 rupees. I add 140 rupees. That is 10%, my target. Enter 1530 rupees, which is somewhere here. Anybody who has really daredevil, he's a daredevil, can go beyond this. But simple is take 10%, and by July, you started in April and May, you had it. In next 2 months, you had 10% return and you're out of the stock. So your capital is back with you. आपने अगर 5 लाख लगाना था तो आपके सिर्फ 3 लाख लगे. आपने उसके ऊपर 30,000 odd profit बनाया and you are out. You want to trail it, it is purely your risk. But as per this system, 10% is more than enough and we can exit onto the stock. So let's close this and see any other stock. ये ले लें सर, ये कौन सा stock है metals में? Tata Steel, 25th of July. I don't know whether it has given us a good thing is metal टूटा बड़ा है, ये अच्छा result हो सकता है ना दे. Let's see it. This is your July. So let's see it, whether it gave us that 10% or not. This is our opening. This is 158 point. Let's put it 159. क्या fraction में क्या डालना? Next was this one. 26th July, again at 158. Let's make it 159 again. Then was here. 149 is the opening कहाँ हुई? 150 पे. You can do it 1 hour later, 1 hour after that. That doesn't make a difference. Then was this one. This is our fourth entry, and it gave us somewhere around about 148 rupees. Divided by, let's see it, whether it gave us any fifth. No, it doesn't. After that, it started going up. So divided by 4, 154 rupees. So I add 115 rupees into it, is 169.25. It touched your 10%. So even in a falling stock, sometimes you can make 10%, and matter from July to October, you made 10% and you're out. 3 महीने में 10% आपका out हो गया. You have to practically put a kind of an AMO order always at the start of the day, because you never know किसी दिन बहुत अच्छा spike आया और ये hit कर गया. If you bend the rules, you would have seen the fifth entry coming also in. Is it clear to everybody right now? सर एक बार इंडिकेटर दिखाना फिर से RSI क्या था? RSI 14 सर. मैं इसका लिंक डाल देता हूँ अभी सर. I will put up in the group. It is a simple thing. अब आपका ये देखो यहाँ पे आ रहा है. Now let's calculate this also. Now this is your next entry, 138, 139.7. Let's make it 140 यार. क्या एक एक पैसों के ऊपर थोड़ी जाना जब बड़ी गेम खेलने. Second entry is here, 137 plus. Next entry is 132 plus. Again 132. Enter. Divided by 4 अभी चल रहा है, आपकी 4 एंट्री होंगी.
135.25 is your average entry right now. And at let's say I add 14 rupees to it. 149.25 is your exit. It may take 10 days, it may take 20 days, it may take 2 months, it may take 3 months, it may take 1 year. इसको बॉटम फिशिंग टाइप का आप एक ले सकते हैं एंड यू कैन डू इट. मैं कल किसी और स्टॉक में भी मैंने चेक किया था. लेट मी बैक टू. सर कौन सा करें बताओ. वही आप लोग बोलो कि नहीं तो फिर वो लगेगा ना मैंने ही अपना ही किया. ये पकड़े, ये ऑरेंज वाला क्या है, IT1 है, ये पकड़े कि कुछ और पकड़ना है, कि उसके साथ वाला FMCG पकड़े कोई. लेट्स कैच सम FMCG. आई डोंट नो. DMart. सी DMart is on now my watch list. मैं आपको बताता हूँ क्यों. This is one stock which I wanted to give you at the end. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usually छठे बार के बाद in a Nifty 100 stock we see a reversal. हमें 7वीं 8वीं एंट्री बहुत कम मिलती है. अब हम इसको भी करते हैं एनालाइज. अगर हमने DMart में एंट्री ले रहे होते तो हमारा कितना होना चाहिए था. DMart is on my watch list. We enter at 4742. 43 कर देते हैं. फ्रैक्शन में क्या करना है. नेक्स्ट इज 4210. 4051. 3948. This is fourth entry and this is our fifth entry. 3785 divided by 5. 4147. इसमें आपका करीब 420 रुपीज ऐड कर लो. ये आपका टारगेट है. 4567. This will be your target for approximately for DMart, and this is your average price approximately here. ये आपकी एवरेज प्राइस थी 4567. सॉरी 4148 के करीब आपकी एवरेज प्राइस है, विच यू हैव टच्ड वंस एटलीस्ट. आप एक बार ब्रेक इवन हो चुके हो. तो आपको अगर इस पे सिस्टम पे ट्रस्ट है एंड इन योर आपके बैक टेस्ट एनालिसिस में आपको ये अच्छा लगता है, आई विल सजेस्ट DMart पे नजर रखें. DMart is a kind of a reversal kind of a stock for me. Please do not do it in options. Please do not do into futures. आप इनमें किसी में भी करते हैं, ये प्योरली आपका रिस्क है. ऑप्शंस में तो ब्लैंकेट नो है. फ्यूचर्स में किसी के पास रोल ओवर की कैपेसिटी है एंड ही कैन डू इट. Is free to do it. I'm telling you, you can do it if you have that capacity. Please do not blame me. This is purely for me a cash trading kind of a strategy. अब हम आके जाके बाकी भी देखते हैं. आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स एंट्री देंगे एंड उस टाइम आप ग्रुप में ये पूछ रहे हो सर DMart ले लें, DMart को क्या हुआ, ये हुआ. ट्रस्ट मी, इन अमृतसर itself, and Amritsar and adjoining area, DMarts have opened up 4 or 5 branches. Big, real big, not a छोटा से कोई 1000-2000 गज में नहीं है. The area which is close to my house, this spreads over 2 acres of land. And on way to Jalandhar, I have seen 2 more DMarts which are also close to one, spread over an acre of land. So they are coming in a big way. So in a couple of years, they may be a big story for us. तो अब हम ये September 2 वाला कोई भी एक चेक कर लेते हैं. ये मिसलेनियस में क्या आता है. लेट्स सी इट फॉर यू. अडानी पावर चेक करें. अडानी पावर इससे ज्यादा नेगेटिव स्टॉक न्यूज वाला कोई स्टॉक नहीं होगा. हम ये पीछे वाला छोड़ देते हैं. हम पीछे से शुरू करते हैं जब इसके ऊपर सारी बुरी खबरें चल रही थी. ये देखें. नाउ लेट्स से जब ये है, आई थिंक सो, जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है,
है ना, ये 23 में आई थी ना हिंडनबर्ग रिपोर्ट। चलो अब तो हिंडनबर्ग बेचारा भाग ही गया इंडिया से, उसका था पता हुआ ना, कितने गाजी आए कितने गाजी गए, वही वाला हिसाब हुआ। मेरा अडानी के ऊपर डिफरेंट है। आई डू नॉट इन्वेस्ट इन अडानी स्टॉक्स, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट ऑन इट। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट थिंग। So I'm not advocating anybody to invest in any stock on based on whatever I am saying is. This is 278 point, हम 279 का लेके चलते हैं। ये वो टाइम है जब अडानी के स्टॉक्स को बहुत बुरी तरह से पीटा जा रहा था और लोअर सर्किट लग रहे थे। दिस इज आवर लोअर सर्किट डे अगेन, एंड वी ओपनड अप हियर अराउंड 235। आई एम ट्राइंग टू शो इन अ स्टॉक जिसमें बहुत नेगेटिव न्यूज थी हमारे लिए। उसके बाद ये नीचे गिरता रहा, इसने हमें यहां इंडिकेशन दी 153.55 पे। सर हम कहां शुरू हुए थे? 290, हम आधे प्राइस पे आ गए, तो हमारे यहाँ पे उसने इंडिकेशन दिया 153.55 पे। हम 154 रुपीज लगा लेते हैं। इसके बाद इसने हमें इंडिकेशन नहीं दिया, तो हम इसको डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं। 223 रुपीज हमारा आपका बन गया है। तो इसमें हमने ऐड करना है 24 रुपीज ऐड कर, 246 पॉइंट, ऑलमोस्ट 247 रुपीज। सर आपका 247 यहाँ पे हिट हो गया ऑन 22 मई 23। मैं तब बात कर रहा हूं जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, मार्केट क्रैश कर रही थी, तब भी अडानी पावर ने जब हमें इंडिकेशन दिया, उसके बाद भी ये स्टॉक ने हमें हमारा टारगेट ऑफ 10% दे दिया। हाँ, कुछ लोगों को अडानी पे बहुत विश्वास है, दे कुड हैव टेकन द राइट, बट आई डोंट बेंड रूल्स। हमारा 10% का एग्जिट का रूल है, तो हम एग्जिट में डाल देते। दैट इज हाउ आई डू स्विंग ट्रेड्स इन लॉट ऑफ द टाइम। मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी करता हूँ, मैं आरएसआई पे भी करता हूँ, मैं ब्रेकआउट्स पे भी अभी भी ट्रेड कर रहा हूँ। फंसता भी हूँ, बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हूँ, पर कोई बात नहीं, दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। सर एक बार वापस वो कैसा लगाने का है दिखाइए ना, ट्रेडिंग में, इसमें चार्टिंग में। हाँ जी, क्या चाहिए आपको सर चार्टिंग पे? सर वो चार्टिंग में फ्लाट आपने हाउ यू हैव शेडिंग सर। स्टार्टेड स्क्रीन में, क्योंकि मैंने अभी ट्राई किया तो नहीं हो रहा है मुझे। ये नहीं हो रहा। हाँ कैसा, नहीं पहले से दिखाइए, फ्रॉम द ये बिगिनिंग। बनाना है, ये कैसे बनाना है? हाँ ये लो सर, प्लस का यहाँ पे आप, चलो नया से बनाते हैं। सर क्रिएट स्कैन को क्लिक करना प्लीज। अब आपके पास पहली लाइन, द स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स, कैश के ऊपर क्लिक करना, मेक इट निफ्टी 100। अब आपने ये प्लस वाला बटन है, इसको प्रेस करना है, प्रेस आरएसआई, जस्ट टाइप आरएसआई, तो आपके पास ये आरएसआई आ जाएगा डिफॉल्ट 14। हमने कुछ नहीं करना, हमें चाहिए जब ये ओवरसोल्ड जोन में है। वो कब आता है? हमारा इंडिकेटर भी हमें बोलता है बड़ी बारी आरएसआई अंडर 30 ओवरसोल्ड, तो हम उसी को यूज कर रहे हैं। यहां दबा दिया नंबर पे, ये 20 आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे, इसको चेंज कर दो 30 एंड रन स्कैन, आ गया आपके पास। अब आप इसको सेव कर लोगे, सेव स्कैन जैसे ही दबाओगे तो वो नाम पूछेगा आपको, तो वो कर लेना। मैं आपको भी इसका नाम ही दे देता हूँ, जस्ट पुट दिस लिंक सो दैट यू ऑल हैव। So please check your chat box, उसमें चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया आपको। So it's a simple way of doing it sir, it's not anything कि कोई बहुत रॉकेट साइंस है। ओके वो सर, आपको, थैंक यू। आप जैसे ही सेव करोगे वो आपके उसमें आ जाएगा। एंड लेट मी, ओके।